हसरंगा आएंगे और डेफिनेटली अपना दूसरा ओवर बॉल करेगा और पहली बॉल डॉट बॉल हुई है एंड वंस अगेन शॉर्ट बॉल, थोड़ी सी शॉर्ट बॉल थी और इस बार लॉन्ग ऑन की जाने पुल किया है मिचेल ने और 43 एंड हसरंगा इंपॉर्टेंट है श्रीलंका के लिए, बट मैं अगर आप लोगों को ये बताऊं ना कि ओवर बॉल कर करके लीग्स में मेरा नहीं ख्याल कोई इतनी ज्यादा वैरायटी उसके पास रह गई है और वो जो फिंगर जब वो स्टक करता है ना तो वो साफ हाथ में वाजे हो जाता है। तो जब आप एक्सपोज हो जाओ ना लाइक दिस, वो इनवर्ड बॉल थी, शॉर्ट लेग के फील्डर के पास गई, एज लगी बैट से, लेकिन कोई रन नहीं बन पाएगा। जब आप एक्सपोज हो जाओ ना फील्डर के आगे, फील्डर के आगे कह लें या आप सॉरी बैटर्स के आगे, तो फिर आपको मुश्किल हो जाता है। इस बार बैक फुट पंच किया लॉन्ग ऑन की जानिब और फिर पैंथम ने सामका ने मिसफील्ड की, बट एक रन बनेगा और 44 और मिचेल फेस करेंगे हसरंगा को और इस बार लेग स्पिन थी, थोड़ा सा मिड विकेट की जानिब के लिए, वाइडिश लॉन्ग ऑन की जानिब के लिए अच्छी फील्ड की बॉल को थैंकफुली अच्छा कलेक्ट किया, एक रन का इजाफा होगा और 10 रन बन गए हैं मिचेल के। मिचेल भी इतना कन्विंसिंग मुझे नहीं नजर आया कि अगर मैं ये कहूं कि मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि बहुत बड़े प्लेयर नहीं है दोनों, इनको फंसाया जा सकता है और अगर ये हाथ से निकल गया और आपका कोई एक आधा बॉलर काबू आ गया तो फिर इट वुड बी अनलकी डे फॉर यू और ये आपको डेफिनेटली फिर हिट करेंगे। तो ये टाइम है, इनको काबू कर लिया जाए और इनको डिसमिस कर लीजिए। रॉन्ग वन थी, डॉट किया, नो ओवर कंप्लीट हो गए हैं एंड इट्स जस्ट 45 ऑन द बोर्ड। 5 रन पर ओवर से जा रहे हैं, 3 विकेट्स गिर चुकी हैं, 22 पे फिलिप्स खड़े हैं और 10 रन पे हैं मिचेल। और ओवरऑल अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो आज श्रीलंका ने फुल काबू कंट्रोल किया हुआ है और श्रीलंका हैज द बेटर ऑफ, और श्रीलंका कंट्रोलिंग नाइसली और थोड़ा सा अपनी स्ट्रेंथ को यूज किया, थोड़ी सी अकलमंदी से विदाउट गोइंग, अगर मैं कहूँ को दिमाग से काम लिया और स्पिन को इंट्रोड्यूस किया, मिक्सअप रखा विद द स्पिन और मेरे ख्याल में कामयाबी समेट ली है न्यूजीलैंड, बिकॉज लाइक्स पेस ऑन ऑन द बैट। अगर पेस आए तो ज्यादा पसंद करते हैं, सेम लाइक देयर कंडीशन। तो पेस को आज मिस किया उन्होंने और 4 से 5 आउट हो सकते थे अगर ये थोड़ा सा चांसेस को कैपिटलाइज कर लेते। जो कैच ड्रॉप किए हैं उसको अगर वो कन्वर्ट करें कि अगर वो कैच पकड़ लिए जाएं तो इट कुड बी ऑल डिफरेंट बॉल गेम। मेरे ख्याल में कुमारा को ओवर देने की बजाय इस टाइम चमिका को ओवर देने चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक। नाउ लेट्स सी के कैप्टन शनाका क्या सोचते हैं। मैं बात बताऊं, जिम्बाब्वे के मैच में पाकिस्तान ने और स्ट्रगल किया, लेस चमिका आया, कैप्टनसी की वजह से भी मैच हारे हैं। थोड़ा सा अगेन सेम वही लेग साइड पे बॉल थी, बट थैंकफुली ये स्लो वन थी तो वो स्केल लेग की जानिब गई, एक रन ही बनेगा। और अदरवाइज अगर ये तेज होती तो वही फ्लिक होता और शॉर्ट लेग के फील्डर को आराम से बीट कर पाते और एक चौका मिल जाता था। पता नहीं क्यों बॉलर्स गिरते हैं लेग साइड पे पहली बॉल ओवर की एटलीस्ट। बड़ा खूबसूरत मंजर है ग्राउंड का और रात का पहर कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में, और पिंकिश ऑरेंजिश सा शेड स्पेसिफिकली जो सूरज के गुरूब होने की वजह से है, तो खूबसूरत मंजर है। शॉट खेलना चाहते थे बट पेस थी बॉलर के साथ और पैड में लगी और बॉल जस्ट पॉप्स अप और कोई रन नहीं बनेगा। बॉल स्किड की, दो के पेस 125 ही थी, लेकिन जो बॉल स्किड किया उसकी वजह से ही वाज क्वाइट लेट ऑन टू द बॉल। और इम्पोर्टेंट न्यूजीलैंड एक मैच जीते हैं, दूसरा मैच अबंडेंट हुआ है। जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, अफगानिस्तान से अगर न्यूजीलैंड का मैच पड़ जाता तो बहुत इंटरेस्टिंग गेम हो सकता था। जो अब एक एक पॉइंट मिल गया, इट कुड हैव बीन वेरी टफ फॉर न्यूजीलैंड। तीसरा बॉल करेंगे चमेका अपने पहले ओवर का और फेस करेंगे फिलिप्स जो कि 22 रन पे खेल रहे हैं। अच्छी बॉल और अच्छी शॉट स्ट्रेट बैट से खेले और फील्डर पहुंचे और ग्रैब किया और एटलीस्ट 2 रन बनेंगे। तीसरा रन लेना चाहते थे बट
नहीं मिला मौका। ये पॉइंट की जानिब अच्छा खेलते हैं विद द स्ट्रेट बैट। ये एक इनकी जो है ना मेरे ख्याल में स्ट्रेंथ है मेनली, जो सीधे बैट से पॉइंट की तरफ निकालता है ना, थ्रैश करता है, हिट बल्ला फेंकता है बॉल पे, ये इसकी मेन शॉट है। और यार अच्छी खेल रहे हैं फिलिप्स, लेकिन अदरवाइज अगर मैं कहूँगा डाउन द ग्राउंड और ये वो फंसाया हुआ मिड विकेट की जानिब, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। 3 बॉल्स रहती हैं और पहला हाफ पहली इनिंग का खत्म हो जाएगा। इट इज 10th ओवर और 3 बॉल्स रहती हैं। 57 बॉल्स में जस्ट 48 रन्स बने हैं अभी तक न्यूजीलैंड के, एंड 6 का रन रेट मेरा नहीं ख्याल कि अचीव हो पाएगा। देखते हैं कि इन 3 बॉल्स में बिग हिट, यस लेग साइड पे था और 6 रन्स फिलिप्स विप किया, और बड़ा छक्का, बड़ा हिट, पहला मैच का आ चुका है, एंड इट्स अ बिग सिक्स डाउन द लॉन्ग लेग रीजन, और थोड़ा सा लेग साइड पे गिरे। ये दोनों पेसर्स दोनों इंपॉर्टेंट है, कुमारा एंड चमिका, और दोनों ही ऑफ टारगेट आज जा रहे हैं। मैं आप लोगों को बोल रहा था कि अगर अनलकी डे हो तो इन दोनों बैटर से आप मार खा सकते हैं, जरा सा ऑफ टारगेट हो तो ये आपको बीट करेंगे, ऑन स्लॉट आप फेस कर सकते हैं। अगर आप टू द लेंथ बॉल करें तो इनको आउट करना मुश्किल नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है, और ये दो बॉलर्स को समझाने की जरूरत है। 54 स्लो वन किया, ओ बिग एलबीडब्ल्यू पील, रन आउट का भी चांस, मिक्स अप एंड कीपर हैज मिस्ड। कीपर के पास डेफिनेटली इतना मौका नहीं होता। बहुत ज्यादा अपील की और स्लो वन था, बीट किया, पिछली टाउन पे बॉल लगी और मेरे ख्याल में तो इट वाज गोइंग डाउन द लेग साइड, डेफिनेटली रिव्यू भी नहीं किया। और लास्ट बॉल है, 5.5 का रन रेट ऑलरेडी मैनेज किया हुआ है न्यूजीलैंड ने। लेट्स सी, मेरे ख्याल में रिव्यू ले सकते थे, रिव्यू ले सकते थे, और अगर रिव्यू ले भी लेते तो ये अंपायर्स बॉल होनी थी, मिसिंग स्टंप्स नहीं होना था, तो इट कुड बी इवन रेड। देखते हैं जब रिप्ले दिखाया जाएगा। लास्ट बॉल है जी पहले 10 ओवर्स की, अगेन स्लो वन की और हिट बैक किया, और इंटरेस्टिंग मुकालमा बैटर और बॉलर के माबैन, एंड इट्स गुड in good spirits actually। 10 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं, 54 रन्स फॉर 3 एंड 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स। it was Finn Allen who was dismissed in the very first over, बोल्ड किया थिक्शाना ने, एंड देन कॉनवे को तीसरे ओवर में, तीसरे या चौथे, तीसरे ओवर कह सकते हैं आप, यस थर्ड ओवर था, आया गया, और सिल्वा ने बोल्ड किया कॉनवे को, और उसके बाद रंजीथा ने अपने छठे ओवर में विलियमसन को, यानी कि टीम के छठे ओवर में और अपने तीसरे ओवर में विलियमसन को आउट किया, और मे बी चौथे ओवर में विलियमसन को आउट कर दिया था, यस चौथे ओवर में। एंड देन फिलिप्स और मिचेल दोनों खेले, कोई 4 से 5 और 6 ओवर हो चुके हैं, वो दोनों खेल रहे हैं और इतना कन्विंसिंग नहीं है अभी तक। लास्ट ओवर में सिर्फ एक बड़ा हिट पड़ा है और एक छक्का पड़ा है, और उसके बाद ये 55 रन बनाने में कामयाब हुए हैं इन 10 ओवर्स। और कैच ड्रॉप हुआ मिचेल का, और 13-14 पे थे जब आसान कैच था, पैंसर निशंका ने छोड़ा है कैच हसरंगा की बॉल पे। हसरंगा ऑलरेडी बेचारा इतना मुश्किल में है, और उसका कैच पकड़ लेते तो उस बेचारे का थोड़ा सुकून हो जाता, जो लास्ट मैच में उसे ऑनस्लॉट फेस करना पड़ा है फ्रॉम मैक्सवेल एंड देन फ्रॉम स्टोइनिस, तो वो अभी उसी से ही सेटबैक से बाहर नहीं आता, तो कैच भी छोड़ दिया। अपॉर्चुनिटीज आई हैं श्रीलंका के पास अभी, मेरे ख्याल में 4 से 5 विकेट्स तो आराम से हो सकती थी, बट दे डिडंट ग्रैब, एंड नाउ मैं आप लोगों को दोबारा बता दूं कि एक अच्छा टोटल मे बी पुट ऑन हो सकता है, मे बी 140 न्यूजीलैंड मे बी कर ही जाए, बिकॉज जिमी नेशम इज स्टिल टू बैट एंड सेनेटनर भी हैं, अच्छा बैट कर लेता है सेनेटर भी। अगर ये बैटर 5 ओवर और मजीद खेल गए तो इट कुड बी 130 प्लस रन्स, अदरवाइज बनना नहीं चाहिए था इतना, लेकिन ये जो चांसेस हैं, जो ड्रॉप चांसेस हैं, इनकी वजह से अब मे बी कॉस्ट करेगा श्रीलंका को। लेकिन बात यह कि 2 ओवर तिक्षाना के हैं, this is the right time to bowl a couple of over from De Silva, even just an over, एक ओवर करा लें, मेरे ख्याल में De Silva उस ओवर में विकेट ले सकता है। एज अ कैप्टन आपको याद होगा कि मिस बॉल सईद अजमल को बहुत यूज किया है, हफीज को बहुत यूज किया है, और उनको पता था कि मेरी स्ट्रेंथ है। इसी तरह De Silva मेरे ख्याल में कि समझ आनी चाहिए
कैप्टन को, शनाका को, कि उनकी स्ट्रेंथ है, उनको यूटिलाइज करना चाहिए एज अ कैप्टन। और लेट्स सी के क्या सिचुएशन बनती है। ग्रुप स्टेजेस में मैचेस जो हो रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। पाकिस्तान के ग्रुप में भी इंटरेस्टिंग है, और इस ग्रुप में, ग्रुप 1 में तो ऑल, मैं कहता हूँ मैचेस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग आफ्टर वॉश आउट ऑफ इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। और कल के मैचेस जो वॉश आउट हुए हैं उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो चुकी है। और मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताऊं कि सिचुएशन बिल्कुल भी इजी नहीं है किसी भी टीम के लिए। अभी तक कोई भी टीम ऐसी नहीं है जो कि अपनी पोजीशन कंफर्म कर चुकी है। मेरे ख्याल में ग्रुप 2 में इंडिया ही ऐसी टीम है जिसके 2 मेजर मैच हैं जो वो जीत चुके हैं, लाइक पाकिस्तान से। इसकी वजह से देख लें, आप लोगों के सामने मैं कमेंट कर रहा था कि धनंजय को लाना चाहिए, और सेम वही किया उसने, धनंजय डिसिल्वा को लेके आया। तो क्रिकेट की अंडरस्टैंडिंग है, कब से देख रहे हैं, इवन दो खेली भी है कुछ क्रिकेट, और इसकी वजह से थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है। पहली बॉल कराई, जस्ट मेनली 1 रन बना है, और ये ओवर बहुत क्रूशियल हो सकता है, इसमें विकेट भी आ सकती है। फिलिप्स ने स्वीप किया और मेरे ख्याल में 2 रन समेट लिए हैं आसानी से, और 57 रन बन चुके हैं। ये ओवर बहुत क्रूशियल है, फिलिप्स डेफिनेटली विल गो हार्ड, और इतना आसान नहीं है धनंजय को हिट करना, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। निशम सेनेटनर सोडी, सेनेटनर तक बैटिंग है, निशम एंड सेनेटनर लेफ्ट, उसके बाद सोडी सोडी फर्गसन बोल्ट, ये सब गुजारा है। धनंजय डिसिल्वा आएंगे, बॉल की शॉट खिंची, बॉल की मिड विकेट की तरफ चिप किया, लॉन्ग ऑन के फील्डर के लिए चैलेंज होगा लेकिन नहीं पहुंच पाए, और पूरी थ्रो थी, 2 to 3 बाउंसेस में पहुंची, और दोबारा से कपल ऑफ रन लिए हैं। ये ओवर अगर आप 8-7 रन में गुजार गए तो बड़ी बात होगी। अगर बिग हिट मारने नहीं देता, असल खुसूसियत ये है धनंजय की कि वो आपको इतना रूम नहीं देता और आपको बॉल के अंदर आने नहीं देता। उसका जो बॉल छोड़ने का पॉइंट है उसके बाद से थोड़ा लेग साइड बॉल की, और अच्छी फील्ड ही मैं कह सकूंगा ये, अदरवाइज इट कुड बी ये मिस फील्ड हो सकती थी। अच्छी फील्ड की है फाइनली, और पैथम निशंका ने, जिन्होंने कैच छोड़ा था स्पेशली फिलिप्स का, और ये अच्छी फील्ड थी, और 1 रन ही बनेगा। स्वीप किया था लेग साइड पे, और अच्छा स्वीप, तगड़ा स्वीप किया था, स्केल लेग पे जानिब खेले थे। मिचेल अभी तक 15 बॉल में जस्ट 12 रन, कोई बाउंड्री नहीं खेली, डेफिनेटली बड़ी हिट के लिए जाएंगे। और शॉर्ट बॉल कर दी है, फिर सीधा फील्डर के पास, एक बाउंस, और निशंका ने फिर फंबल किया, लेकिन एटलीस्ट मैनेजेस टू गैदर इट, और 1 रन ही बना है। थोड़ा सा प्रेशर है क्योंकि उनको पता है कि मैंने जहां फ्लाइट दी तो बैटर विल गो बिग, और ये ओवर जो है गुजारने बहुत जरूरी है। इस टाइम पे लॉन्च करना है न्यूजीलैंड ने, यही वो टाइम है जब इनको कंट्रोल करना है। 10.5 ओवर, लास्ट बॉल, फुल टॉस, शुक्र है कि बच गए, अदरवाइज बिग हिट। कोई भी बॉल बैटर्स ने कंप्लीटली क्लीनली नहीं पकड़ी, फंबल किया, और सिंगल की बजाय 2 रन बने। ये फील्डिंग पाकिस्तान से बिल्कुल रिजेंबल कर रही है, हमारे कैप्टन से लेकर हमारे हाल प्लेयर तक, इवन दो कि शदाब की भी जो फील्डिंग क्वालिटी है ना वो गिर गई है। फील्डिंग क्वालिटी को मेंटेन रखना बहुत जरूरी होता है। ओवर ऐसा था इसमें कि अगर मैं कहूँ 8 रन बने हैं, बट 8 से 9 रन बने, 8 रन में भी बने हैं, यस, और 8 रन बने हैं। अगर कोई थोड़ा सा लूज बॉल होती तो ये एक बड़ी हिट की तरफ डेफिनेटली जाना था, थोड़ा सा इसे हल्की सी फ्लाइट देनी चाहिए थी ताकि बड़ी हिट की तरफ जाते, बट लकीली ये मिस फील्ड की वजह से इसमें 8-9 रन भी बन गए। अदरवाइज ओवरऑल अच्छा ओवर था, खिंची हुई बॉल की है धनंजय डिसिल्वा ने। नाउ अब महेश तिक्साना को लाना चाहिए एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि जो विनुदु हसरंगा है वो ज्यादा थोड़ी सी फ्लाइट कर रहा है, और वो आसानी से रीड हो पा रहा है। तो अगर वो रीड हो पा रहा है तो वो बड़ा मुश्किल है कि वो मे पॉसिबली वो भी विकेट ले जाए, ऐसी बॉल करा दे जो कि बैट्समैन लेग स्पिन को ऑफ स्पिन, या ऑफ स्पिन को लेग स्पिन। क्योंकि आपको ये अपनी वेरिएशन अगर वो बैट्समैन अगर समझ गया तो फिर तो आपको बिग हिट आने हैं। तो ये थोड़ा सा है, चमेका आएगा, ये चमेका के ओवर जो है ना पता नहीं कैसे गुजरेंगे, और ये पेसर्स को अच्छा खेलते हैं। स्लो वन किया है, सीधा लॉन्ग ऑफ की जानिब खेले हैं, 1 रन का इजाफा ही होगा। अच्छा कोई टाइम नहीं किया था मिचेल ने, और रनिंग कमाल की थी, लॉन्ग ऑफ की जानिब सीधी बॉल गई है, और कुमारा ने हाथों में से 2 रन दे दिए। तो इस तरह की जो फील्डिंग है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। हाथ में से 2 रन बने हैं, 1 रन था,
टोटली और ये 2 रन बन चुके हैं। अब शनाका मिड विकेट, शॉर्ट मिड विकेट से सीधा लॉन्ग ऑफ की पोजीशन पे गया खुद फील्ड करने। ऐसी फिटनेस है दोनों टीम्स, पाकिस्तान श्रीलंका दोनों एक जैसे प्लेयर हैं दोनों के। अब आएंगे बॉल करेंगे, अगेन स्लो वन थी, इतनी अच्छी टाइम नहीं किया, बैकवर्ड पॉइंट पे जो स्वीपर है उसने बॉल पकड़ी और मुश्किल से ही पकड़ी है। इस वक्त फील्डिंग करना ज्यादा मुश्किल हुआ है, बॉलर फिर भी बॉल अच्छा फेंक रहे हैं लेकिन फील्डर्स बिल्कुल साथ नहीं दे रहे और क्लीन पिक ही नहीं कर पा रहे, क्लीन पिक नहीं करते और वो रनिंग इतनी तेज कर रहे हैं कि भागते हैं वो रन्स के लिए। 16 रन्स पे खड़े हैं मिचेल, 46 बॉल में 51 रन्स। ये है मींस टू से ये कैपेसिटी, अगर ये कैच पकड़ लेते तो ये भी पार्टनरशिप ना होती। फिलिप को थोड़ा काबू करना होगा, अदरवाइज फिलिप एक दो छक्के मार गया तो रन रेट अपना स्ट्राइक रेट बेहतर कर जाएगा, ये बहुत क्रूशियल है। स्लो वन बीट किया आउटसाइड ऑफ स्टंप, अच्छा मिक्स ऑफ पेस कर रहे हैं, डॉट बॉल होगी, दैट्स गुड, और रीड नहीं कर पाए थे अच्छे से। और 11.3 ओवर्स में 66 रन है, अंडर 6 है अभी भी, और लेग साइड पे बॉल नहीं देनी होगी, आउटसाइड ऑफ स्टंप ज्यादा बॉल नहीं करनी होगी। छोटी छोटी बातें इसका ख्याल ही रखना है, दैट्स इट। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि बहुत बड़ी बातें हैं। अच्छी बॉल ओवरऑल कर रहे हैं और दोनों बॉलर्स मेरे ख्याल में, अगर मैं कहूँ कि लास्ट ओवर तनंजिया का भी देखें बहुत अच्छा था, बाउंड्री नहीं आई, ये ओवर भी बहुत अच्छा, अभी तक 11 बॉल्स में बाउंड्री नहीं आई। चौथी बॉल अगेन स्लोर किया, आउटसाइड ऑफ स्टंप रोकना होगा, अगेन मिस फील्ड है, बट देखना है कि फील्डर पहुंच सकते हैं कि नहीं। यस ही मैनेजेस टू रीच टू द बॉल और कट ऑफ किया और 2 रन बनेंगे। हाथ से मिसफील्ड की दोबारा से फील्डर ने और फिर कपल ऑफ रन बनेंगे। इस टाइम पे श्रीलंका करंटली श्रीलंकन्स आर नॉट डूइंग वेल इनफ, आउटफील्ड इज वेरी poor, or Kumara has been placed from long off to the backward point inside the circle and the ball just followed him and he manages again misfield there, और 2-3 रन बन के they have scampered for 3 runs and good running between the wicket, especially from New Zealanders, and again in this over no boundary, but the way Sri Lankans are fielding, it's causing and creating pressure on Sri Lankan bowlers. अच्छी बॉल फेंक रहे हैं इस टाइम पे, जो है फील्डर्स को सपोर्ट करना चाहिए और बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिल रही। 7, 8, 10 रन बन चुके हैं इस ओवर में भी ऑलमोस्ट। वंस अगेन स्लो था, बीट किया और सॉरी 10 रन नहीं, 3, 3, 6, 7 रन बने हैं ओवर में, बहुत अच्छा ओवर आउटसाइड ऑफ स्टंप बीट किया, डॉट बॉल टू फिनिश एन ओवर और ऑलमोस्ट स्टिल कीपिंग अंडर 6 रन पर ओवर, और दैट्स वेरी गुड बॉलिंग। नाउ I think Mahesh Theekshana has to replace De Silva because this is the time when New Zealanders are trying to go big, and if you deceive them and if अगर वो अटैक करें, if they are going to hit you for a 6 and you are able to deceive them, then for sure shot you can take wicket at the moment। बहुत crucial है time, इस time पे this time you need a wicket, at least a wicket, otherwise in last 8 overs they can manage 70 runs, जो भी 70 हैं 12 ओवर में, अगर विकेट ना आई तो ये 70 मजीद 8 रन ओवर में बन सकते हैं। 10 पर ओवर, 10 पर ओवर is not big deal in such a big grounds and when your fielders are not bowling well enough, so very tough। A drop catch may cost them it could be very costly miss which Panther Nasanka has dropped। Venedu Hasranga आएंगे and ball is first ball, Hasranga or Theekshana both are his main weapon, and first ball Mitchell Marsh just uses his feet and manages to just scoop it towards mid on and takes 1 run। Fielding is not going very good at the moment। Yes, Phillips again taking guard and now changing his guard because going for slogs। मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ, what a delivery, this is the change of angle from Hasranga, he gone bit deeper and side arm बिल्कुल यूं करके बॉल फेंका है, जस्ट यूं फेंकता है and then goes
थोड़ा सा मलिंगाज एक्शन पे गया एंड अगेन और सीधा फील्डर के पास गई, दैट्स लकी और क्वाइट स्ट्रेंज डिलीवरी. हैव नेवर सीन हिम टू बॉल these deliveries in इंटरनेशनल गेम, बट गुड डिलीवरी. थोड़ा सा फिलिप्स को बीट किया वाइड. मैं कहूंगा कि बॉल इतनी अच्छी नहीं थी. मिचेल ने बहुत स्ट्रॉन्ग फर्मली हिट किया डाउन द ग्राउंड. विल सी कि वेदर फील्डर एबल टू कट इट आउट. यस, 2 रन्स बनेंगे एटलीस्ट और completes the 2 run. Good over is going fine. They are drying up the boundaries. That's very crucial. Without hitting boundaries you can't go big in this ground. एक सिंपल सी ट्रिक है, यू हैव टू स्टॉप बाउंड्रीज. क्वाइट लो क्रीज में गए, नीज को भी अपने बेंड किया और बॉल इतनी नीचे से कराई कि इतना बाउंस ना मिले. रिवर्स स्वीप की मिचेल ने, सीधा थर्ड मैन के पास गई, डॉट बॉल होगी. अच्छा ओवर करा रहे हैं बट these varieties were missing in the game when Maxwell was having all of it against Hasranga. If he had the capacity to bowl such deliveries, why didn't he try against Maxwell in the last game? Wrong one है, point के फील्डर के पास गई and he just fumbles it for another 2. Wow, too many fumbles and these fumbles will surely cost Sri Lanka in the end. Like you have seen Pakistan versus Zimbabwe and Pakistan just losing by 1 run thin margin. So these fumbles in the end will definitely have very solid impact on the game. Over complete हो गया श्रीलंका का और मैं अगर ये कहूँगा श्रीलंका is going very fine and I am supporting in this match to Sri Lankans and my support is for Sri Lanka. Both are my teams in Group 1 because I am favoring a bit weaker side. Australians and English and Australian side is very strong, so I am going with both of these teams. I am wishing that both of them would go to it into the semi-finals or from Group 2. It is very interesting. One team is South Africa and the other one was definitely Pakistan, but Pakistan is not looked in a very good position. Indians are far ahead from Pakistan and the most probably is India and South African will go to play semi-final from Group 2. Jamaica's to bowl his third over, once again slow one, he thrashed it to the covers, 4 runs. फिलिप्स को शॉर्ट बॉल करेंगे तो मसला होगा. फिलिप्स अब इनसे काबू नहीं होना. मैं आप लोगों को बता दूं अर्ली ऑन फिलिप्स के बैट पे बॉल नहीं आ रही थी बट नाउ फिलिप्स को पता है कि उसने कैसे हिट करना है. बहुत एक चीज है ना कि आप प्रेडिक्टेबल हो गए हो, बार बार स्लो वन कर रहे हो और बहुत आउटसाइड ऑफ स्टंप कर रहे हो. एटलीस्ट थोड़ा सा तो विकेट में करो ना. गोइंग डाउन टू फॉर लेग साइड आउटसाइड ऑफ स्टंप, आस्किंग फॉर बैटर टू हिट. He just hit it with a fearsome strength or ball just races toward covers boundary. Now change in field positioning, scale leg into the circle, third man, deep cover, long off, long on and mid wicket. थोड़ा outside off stump ball करना होगा definitely. Yes, this is good delivery and another drop and this time Shanaka drop it. Dasun captain leading again and dropped the catch. What a brilliant bowling and in the end a drop opportunity once again. Too many drops and too many misfield. अगर मैं ये कहूँ कि after such fielding और मैं कहूँगा कि Srilankan didn't deserve to win a game from here. Though the chance was not tough, but he has somehow manages to have both hands on the ball and just failed it. Another drop chance. It goes as a drop chance and Philip is now on 47 on 38 deliveries with two chances given by Sri Lankans and both were on long off position. Now मेरे ख्याल में that's what I think they will definitely going to score 140 plus. Mid wicket and 4 runs again. Very costly over 2 boundaries.
स्लो वन अगेन एंड 50 on 39 डिलीवरीज। मैं यही प्रिडिक्ट कर रहा था, दैट्स व्हाट आई वाज प्रिडिक्टिंग कि अगर इनको मौका दिया तो दे कैन गो बिग, अदरवाइज दे डोंट हैव सच कैपेसिटी टू टेक द इनिंग। दो चांस फिलिप्स के छोड़ चुके हैं और दोनों आसान कैच थे। एक तो बिल्कुल ही सीधा था, एक थोड़ा सा रनिंग था, बट रसूल शनाका के दोनों हाथ पहुंचे थे। दिस टाइम हिट इनटू द गैप और मिड विकेट एंड लॉन्ग ऑन का जो गैप था उसको अच्छे से गैप को तलाश किया और बॉल पहुंचा दी है बाउंड्री के बाहर। 3 बॉल में 10 रन बन चुके हैं। ये अच्छी बॉल थी आउटसाइड ऑफ स्टंप, तेज यॉर्कर था और अगेन व्हाट आर रनिंग और इवन देयर में बी चांस ऑफ ओवरथ्रो बट नहीं। Classic running between the wicket and all the pressure is on the fielders. They are not Sri Lanka poor fielding display that is being shown on the screen, and it may cost them a match. It may cost them a game. Too many drop catches and too many misfields. At least 15 runs. At least 15 runs. I think given away by Sri Lankans. Fifth ball of the over, slow one and good delivery. I think it's not a wide, but umpire given it wide. That's quite strange. I think just it jumps and swings away after it picked the ball, but umpire just gave it a wide delivery. Already 13 in this over, and I was just discussing it on it that two pacers, Kumara and Chamika, are very important for Sri Lanka, but today they gave too many runs. One over have been given to Kumara. He gave more than 10 runs, and now Jamaica in his third over yet to complete and already given away 29 runs once again. Oh, no chance. What a timing. Outside off stump, too full, and just he chips it and goes past, miss the deep backward point fielder. Once again, third boundary of the over. The game is totally going away from the Sri Lankans, and it's just because of poor fielding and poor bowling. The fielder was at least 10 to 15 yards inside the boundary and has to cut it off. The ball was timed really well and just misses it. Costly over 3 boundaries, 2 couples, 1 wide, and a drop chance in this over. अगर आप फील्ड अच्छा नहीं करेंगे, if you don't feel well, definitely आप मैच नहीं जीत सकते. अगेन स्लो वन था, he didn't even reach it, but 1 run over complete, 94 runs. Wow, what a recovery in 12 overs. In 12 overs, New Zealand were 70 for 3, and now in 14 overs, they are on 94. What a good batting, what a good display from Phillips, and well on the top, I think now. Phillips on 58 and Mitchell on 20 to 14 overs gone, 3 wickets, and they had approximately batted last 10 overs and now going for bigger shots. मैं सिर्फ ये कह रहा था कि ट्रिक मिस करता है, कैप्टन थिक्शाना को ओवर नहीं दे रहा. वंस अगेन ही इज डूइंग द सेम एरर, नॉट गिविंग ओवर टू थिक्शाना. At least need 1 wicket, need to expose Nisham and the new. जब भी नया बंदा आएगा, न्यू कमर आएगा, he will definitely struggle. तो 1 wicket can change the whole scenario, but giving over to Jamaica when you know that he's not bowling too well, so risking and taking, it's a very big risk which Dasun Shanaka has taken, and it just don't goes in Sri Lanka's way. Now let's see who is going to bowl 15th over, and I am still Vindu Hasranga. I still thought whether Thikshana will be given an over, but it's Vindu Hasranga. Again, good ball, but it hit it very well. Once again, Phillips is changing the whole scenario of the game. Hit it over the covers fielder for 4 runs. That's very good shot. And again, another boundary. Too many boundaries are floating in, and it's just changing the dynamic of the match. Early struggle thi Phillips was struggling early on, and
They didn't takes his wicket. Now in last 3 overs, the run rate goes to 13. Short ball, long on पे खेला, once again misfield हुई. I don't know क्या हो गया श्रीलंका को, इतना क्यों पुअर फील्ड कर रहे हैं. मैच का पूरा सिचुएशन ही बर्बाद कर दिया. जस्ट 1 रन टू द लॉन्ग ऑन पोजीशन. बॉडी से दूर बॉल नहीं करना, बॉडी पे बॉल करो फिलिप्स को. फिलिप्स बॉडी से दूर. बोल्ड. मिचेल वाज नॉट प्लेइंग वेल. इतना ज्यादा वेनेजुएला श्रीलंका सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे बहुत बड़ी विकेट ले ली है. बहुत लेट विकेट आई है, ये बहुत अर्ली ऑन विकेट आ जानी चाहिए. पर मिचेल गोज एंड बोल्ड बाय हसरंगा. और आई डोंट लाइक द वे Sri Lankans fielded in the last 10 overs and fast, especially fast bowlers and fielders. बहुत बुरी फील्डिंग की है. एंड मैं आप लोगों को बता दूं कि श्रीलंका के लिए मैच जितना इतना आसान नहीं होगा. अर्ली ऑन इट लुक लाइक श्रीलंकन वर रियली डोमिनेटिंग एंड their spin were unplayable for New Zealanders, but suddenly they have fallen apart, or because they didn't field well in the last 10 overs, or they have misfields for multiple times and cost them at least 15 runs more. So एक दो runs, couple of runs matters a lot. And what if you have misfielded for 10 to 15 runs? Too many in the World Cups. Let's see how Sri Lanka fields and bowls in the last 6 overs, because their fielding were very poor in the last 7 to 8 overs. They have misfielded too many times, dropped too many catches, and now Phillips is just playing a phenomenal inning. Early on, he was just struggling to hit the bat on the ball, and now he is playing very good. They are not giving, they are giving too much room to him. Nisham into the crease, or poor throw once again. I don't understand what has happened to Sri Lanka's fielding. Off the mark straight away, hit the sweep shot, and it's 100 up for New Zealand, and well in time. Earlier it looked that it will be like somewhere around 16th over, but now in the 15th over, and it's in very good time. Fuller delivery, hit it to the covers fielder Phillips. Dot delivery this time. Phillips not feeling good, looked a bit tired. 45 deliveries for a 63 runs. Brilliant batting. This time wrong one, just chips it toward mid-wicket position and look to, whoa, brilliant running. And it could be a disaster. The throw was very good this time from Nisanka, but just misses the stump. Otherwise, Nisham would be a goner. 102 for 4, and in 15 overs, Senatner to come with Ish Sodhi, and New Zealand has to bat for 5 more overs, and it all depends on Phillips. Sri Lanka has to take wicket of Phillips to restrict them under 140. Otherwise, New Zealand could set target more than 150 for Sri Lanka, which could be very difficult for Asian team. Like any Asian team can struggle on these Australian pitches if you have a couple of good pace bowlers like Sodhi and Bolt. It would be very tough for Sri Lanka to go for the total anything above 150. Very crucial. अच्छा जा रहे थे श्रीलंका वाले. Early on they were bowling quite well. Their spinners were doing very good job, but suddenly it was their fielding who started to fall and drop couple of catches. When Phillips were on 25, they dropped 2 catches, and he totally takes advantage. Lehuru Kumara is back with his spell, second over of the game, and
The first over was not that accurate. 12 runs gave away in that over, and first ball, Nisham tried to guide it towards third man, and 1 run. The fielding was not well from the Sri Lankans, and it was worst of the last 4 to 6 games. It was not only bad; it was way too bad. It was way below average. What a shot! Straight to the fielder and just 1 run. Just 1 run. It was very well timed. Kumara just bowls a slow one and it goes straight towards cover and 1 run. Phillips' wicket is very important for New Zealand to restrict. Even Phillips' wicket is important for both of the sides, even for Sri Lanka and New Zealand. And New Zealand will be looking at if Phillips keeps on batting for the last couple of overs, then it is most probably then New Zealand will score more than 150. Nisham to bat and hit it just down the ground towards mid-off for a 1 run. Short ball not timed well, and mistimed shot goes to mid-off fielder for 1 run. And all eyes on Phillips and New Zealand. At one stage, I thought that New Zealand were not going to score 100 when Sri Lankans started to falter in the field, and it just gave the momentum to New Zealand team, and now they are in a very strong position. Phillips to face Kumara, slow one and goal shot, and let's see. Yes, it's crossed the boundary and hit straight down the wicket for 6. Too many slow ones, and he just picks it and hits straight for 6. Big hit, 74. Phillips. I never let it happen if I am a captain or I am fielding on the ground. For sure shot. For today's inning, what Phillips were playing at the start of his inning, he was very struggling, and now he's totally into the game and he's totally controlling the game. Wide of off stump and nothing delivery. Lucky to have 2 fielders on the offside, just 1 run. Phillips didn't like inward ball coming into the stumps and not too full, but they didn't bowl, and he just has better Sri Lankan bowlers today. मेरे ख्याल में there is no need to go outside off stump for Phillips. अगर आप उसको गुड लेंथ से बॉल करें और टॉप ऑफ ऑफ स्टंप, यू हैव जस्ट नीड टू बॉल टॉप ऑफ ऑफ स्टंप टू Phillips to take his wicket. That's it. But no bowler did it. And once again, Thikshana was not brought in on time when it was required. Short ball, and Nisham just pulls it towards scale leg. Not well timed again. Over completes, and a big over once again. 11 runs of this over, and New Zealand are well on their way to put a very good total. And it could be very challenging for Sri Lanka. Anything over 140, 150 is very challenging for Sri Lankans, because they know that New Zealanders have very good bowling side, and New Zealand can restrict any Asian, especially Asian teams, including India. They will definitely give tough time to the batters to score on this pitch, because they have very good pace attack, especially Bolt and Sodhi and then Ferguson. So Sri Lankans have to really work hard to go for this target. Earlier they have the chance to restrict them under 120, but now it's well off. 160 is on the card for New Zealand, and now Dasun will bring on Thikshana. It is not the right time to bring in spinner in the last 3 or 4 overs, asking too much for the bowlers. I think this is not the right plan for Sri Lanka. They have to complete his spell, at least give him 3 runs in first 15 overs. But I don't think, and I don't understand this strategy. Yes, Thikshana in, and first wide of off stump delivery given wide by the umpire, and
Nisham tried to sweep it, but it's way down the off stump and umpire gives it wide. Wide to start 2 overs, 7 runs. Now starting his third over. Let's see how he bowls in these crucial moments. Try to hit reverse sweep and this time outside off stump dot delivery. He's a mystery bowler. Why you think of it that you have to go for last 2 to 3 overs? Thus one must think it that he has the chance to wrap the batting order of New Zealand, but he missed this straight full toss, uses his feet and hit it down the ground towards long off position for 1 run. Phillips will definitely go harder to Thikshana and it will be interesting to see whether he successfully do it or not, because he well set 73 on 49 deliveries. He was 23 on 23 deliveries and now completely changed. He's well set and look to hit big to Thikshana. Short ball and hit it over covers and it's a big shot for 6. Yes, this is the pressure what I'm talking about. Asking spinners to bowl in the last over, in the late over, is asking too much. Big shot and easily goes past to the fielder toward long off or toward extra cover region, and it's 80-meter hit and it's for 6. If I was on the ground, I will definitely give Thikshana these 2 overs well before 15 over to get at least couple of wickets to add on pressure to New Zealanders. But now gone again towards long off and yes, again 6, one more. He didn't learn from his mistake what he did against Australians and it will cost them a match. I think well on for 160 plus 2 short delivery and hit it cleanly, pulled it over long on for 6, 2 sixes and 85. What a knock! 51 deliveries for his 85 when he was struggling earlier in 23 deliveries, just scored 23 and in next 27 deliveries he scored 60 odd runs. What a change in momentum. Fuller delivery, it's straight and a faster one, just manages to hit towards long off for 1 run. That's what I was trying to say and trying to that's what my opinion was. Don't ever spare your spinners to the last 17th, 18th over. It could go for maximum. Yes, it has already gone for it. Nisham just whip it towards short leg for 1 run to complete the over, and it's a big over with 2 sixes in the over. And now, well set, Phillips is targeting his century, and he has 3 overs to it, just 14 runs more needed, and a bit of luck which he had already well before 30-40 runs when he was dropped twice by Sri Lanka and twice on the long off boundary. The match was in complete control of Sri Lanka, but I think they have just missed the trick.